This is my prayer to thee, my Lord. Rabindranath Tagore. This is my prayer to thee, my Lord. Strike, strike at the root of penury in my heart. This is my prayer to thee, my Lord. Strike, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. And give me the strength to surrender my strength to thy will with love. A poem by Rabindranath Tagore. About the poet. Rabindranath Tagore, 7 May 1861 to 7 August 1941, was popularly known as Gurudev, was a poet, writer, music composer, and painter from India. He reshaped Bengali literature and music, as well as Indian art with contextual modernism in the late 19th and early 20th centuries. Author of the profoundly sensitive, fresh and beautiful verse of Geetanjali, Song Offerings. He became in 1913 the first non-European to win the Nobel Prize in Literature. Tagore's poetic songs were viewed as spiritual and mercurial. However, his elegant prose and magical poetry. Rabindranath Tagore, 7 मई 1861, 7 अगस्त 1941, लोकप्रिय रूप से गुरुदेव के रूप में जाने जाते थे। भारत के एक कवि, लेखक, संगीतकार और चित्रकार थे। उन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत, साथ ही साथ 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकतावाद के साथ भारतीय कला का पुनरुत्थान किया। गीतांजलि, गीत प्रस्ताव के गहन संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता के लेखक। वे 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। टैगोर के काव्य गीतों को आध्यात्मिक और मधुर के रूप में देखा गया। हालांकि उनकी सुरुचिपूर्ण गद्य और जादुई कविता। About the poem. This is from the song No. 36 of Tagore's Geetanjali, Song Offerings. The poem has a universal appeal. Tagore's prayer reads more patriotic and humanistic than spiritual. Tagore dreamed for a heaven on earth. For him, strength is not physical. It is that of the spirit or the soul. Tagore held that man can elevate himself to godhood if he assumes divine qualities. He believed that if man perfects himself after the divine, he need not seek any other heaven elsewhere. Tagore refers to the fact that tireless striving stretches its arms towards perfection of ever-widening thought and action. In this short prayer, Tagore prays to God to bestow his supreme qualities upon mankind and perfect them to create a heaven on earth. यह टैगोर की गीतांजलि गाने की पेशकश के सॉन्ग नंबर 36 से है। कविता में एक सार्वभौमिक कैपल है। टैगोर की प्रार्थना आध्यात्मिक से अधिक देशभक्ति और मानवतावादी पढ़ती है। टैगोर ने धरती पर एक स्वर्ग का सपना देखा। उसके लिए ताकत शारीरिक नहीं है, यह आत्मा या आत्मा का है। टैगोर ने कहा कि यदि मनुष्य ईश्वरीय गुणों को अपनाता है तो वह खुद को ईश्वरत्व में ऊंचा उठा सकता है। उनका मानना था कि यदि मनुष्य परमात्मा के बाद खुद को पूर्ण करता है तो उसे किसी अन्य स्वर्ग की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य जगहों पर टैगोर इस तथ्य को संदर्भित करते हैं कि अथक प्रयास कभी विचार और कार्रवाई को व्यापक बनाने की पूर्णता की ओर अपने हथियार फैलाते हैं। इस छोटी प्रार्थना में टैगोर ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह मानव जाति पर अपने सर्वोच्च गुणों को
अख्तियार करे और उन्हें पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने के लिए परिपूर्ण करे। The poem opens with a humble appeal to the Almighty to give him strength to perform the divine mission on earth. Tagore believes that penury of a person or a nation is not lack of physical possessions. It is the absence of kind-heartedness. England at that time was very rich in material wealth. But the people and the nation were still impoverished according to Tagore because they were unkind and inhuman towards the poverty and suffering of Indians. He desired to build India on the foundations of kindness and concern. Hence, Tagore prays to God to strike at the root of penury at heart. Then Tagore refers to the concept of equanimity or sthitapragyata referred to in the Indian scriptures. One should maintain a sense of balance between prosperity and poverty. It is quite subhuman to jump with joys and slump with sorrows. So, Tagore prays to God to confer upon him the capacity to bear both joys and sorrows lightly. In the subsequent lines, he prays to God to keep his mind high above daily trifles. कविता सर्वशक्तिमान से विनम्र अपील करती है कि वह उसे पृथ्वी पर दिव्य मिशन प्रदर्शन करने के लिए शक्ति प्रदान करे। टैगोर का मानना है कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र का आधार भौतिक संपत्ति की कमी नहीं है, यह दयालुता की अनुपस्थिति है। उस समय इंग्लैंड भौतिक संपदा में बहुत समृद्ध था, लेकिन लोग और राष्ट्र अभी भी टैगोर के अनुसार खराब थे क्योंकि वे भारतीयों की गरीबी और पीड़ा के प्रति निर्दयी और अमानवीय थे। उन्होंने दया और चिंता की नींव पर भारत का निर्माण करना चाहा। इसलिए टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह हृदय की तपस्या की जड़ पर प्रहार करे। फिर टैगोर ने भारतीय धर्मग्रंथों में निर्दिष्ट संभाव या सिद्धांतार्थनाथ की अवधारणा को संदर्भित किया। समृद्धि और गरीबी के बीच संतुलन का भाव बनाए रखना चाहिए। खुशियों के साथ कूदना और दुखों के साथ फिसलना काफी अमानवीय है। तो टैगोर भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसे खुशी और दुख दोनों हल्के से सहन करने की क्षमता प्रदान करें। बाद की पंक्तियों में वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह अपने मन को इस दैनिक मुसीबतों से ऊपर रखे। True love is selfless. It seeks fulfillment through service. Here, Tagore tries to present the abstract concept of love in its concrete form of service. Love turns fruitful only in selfless service. Therefore, Tagore prays to God to give him the strength to make his love fruitful in service. Tagore is perhaps disheartened to see his countrymen disowned and discarded by the British. It further pained him to see the Indians meekly surrendering before the cruel authority of the British rulers. So, Tagore seeks divine strength never to disown the poor, not to surrender before insolent might. At the end, Tagore visualizes a strong and independent India. He is not unmindful of the fact that absolute power corrupts absolutely. Strength without obedience leads to power-mongering. Hence, in the last lines, Tagore prays to God to bestow him the strength to surrender his strength to the divine will with love. सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, यह सेवा के माध्यम से पूर्ति चाहता है। यहाँ टैगोर प्रेम की अमूर्त अवधारणा को अपनी ठोस सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। प्रेम निस्वार्थ सेवा में ही फलदायी होता है। इसलिए टैगोर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह अपने प्रेम को सेवा में फलित होने के लिए शक्ति प्रदान करे। टैगोर शायद अपने देशवासियों को अंग्रेजों से विमुख और विमुख होते देखने के लिए बेचैन हैं। इसने आगे चलकर भारतीयों को ब्रिटिश शासकों के क्रूर अधिकार के सामने आत्मसमर्पण करते हुए देख लिया। इसलिए टैगोर ने दिव्य शक्ति की मांग की कि गरीबों को कभी भी अपमानित न करें, इससे पहले कि वह ढीठ न हो। अंत में टैगोर एक मजबूत और स्वतंत्र भारत की कल्पना करते हैं। वह इस तथ्य से बेखबर नहीं है कि निरपेक्ष सत्ता बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। आज्ञाकारिता के बिना शक्ति शक्ति को मजबूत बनाता है। इसलिए आखिरी पंक्तियों में टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह अपनी शक्ति को आत्मसमर्पण करने की शक्ति को प्रेम के साथ आत्मसमर्पण करने की शक्ति प्रदान करे। सारांश का अंत।